Hello students, so the question is CaCO3 is taken in 1 liter container which is on heating decomposes according to the equation, and the equation is CaCO3 solid and which dissociate into CaO solid and CO2 gaseous on heating. The Kp of the reaction is given 1.5 atm at 1000 Kelvin temperature. Calculate the moles of CaO present at equilibrium. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, तो आइए देखते हैं इन चारों में से कौन सा राइट आंसर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इक्वेशन क्या था। इक्वेशन में सॉलिड CaCO3 ऑन हीटिंग गिव्स सॉलिड CaO plus gaseous CO2. Now the reaction is a reversible reaction and the value of Kp of this reaction is given 1.5 atmosphere. Now for this reaction अगर मैं बात करूँ Kp के बारे में, तो at equilibrium Kp क्या होता है? You must know Kp equals to क्या होता है? Partial pressure of product divided by partial pressure of reactant. Now what are the reactants and products of this reaction? Here the products are CaO solid and CO2 gaseous. That means product के place में हम लोग लिख सकते हैं partial pressure of CaO into the partial pressure of CO2 divided by, and in the place of reactant we can write the partial pressure of CaCO3. ना यहाँ पर जो CaCO3 और CaO है वो तो सॉलिड स्टेट में है और उसका पार्शियल प्रेशर 1 होता है, तो वी कैन राइट 1 इनटू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 which present in gaseous form divided by the partial pressure of CaCO3 is also 1. That means Kp equals to P of CO2. तो इस कैलकुलेशन का कंक्लूजन क्या आया है? Partial pressure of CO2 that equals to Kp and which equals to 1.5 atm given. Now इस क्वेश्चन में आपको क्या डिटरमाइन करना है? The number of moles of CaO present at equilibrium. Now इस रिएक्शन में एक चीज को बहुत ही ध्यान से देखो, वो है रिएक्शन में जितने मोल ऑफ CaO प्रोड्यूस्ड हो रहा है उतने मोल ही CO2 प्रोड्यूस्ड हो रहा है. So we can say कि number of moles of CaO produced that equals to number of mole of CO2 produced in this reaction. Now number of mole of CO2 कैसे determine होगा? तो यहाँ पर आपको अप्लाई करना है the ideal gas equation, that is PV equals to nRT for the CO2 gas. तो we can say P of CO2 into V that equals to N of CO2 into RT. Now the N of CO2 that equals to P of CO2 into V divided by RT. Now put the values. P of CO2 is 1.5. That means 1.5 into V is given 1 liter container. That means the value of V is 1 divided by R is 0.082 into temperature is 1000 Kelvin. So put it. Now if you calculate it, you get 0.018. So the number of moles of CO2 that is 0.018. Now equation में number of mole of CaO and number of mole of CO2 is equal. तो number of moles of CaO जो produced होगा वो भी 0.018 moles. तो हमारा राइट आंसर इज ऑप्शन बी 0.018. तो आई थिंक द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर. बेस्ट ऑफ लक.